I am Academy Senior Under Officer Ahmed Mustaba Arif Raja from 152nd PMA Long Course, and I hail from Kotli Azad, Kashmir. 18th October 2025 remains as an unforgettable day for me, as today I have been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Besides sheer hard work, countless blessings of Allah Almighty, prayers of my parents, and relentless efforts of my instructors have been the deciding factor for the achievement of this distinction. I joined Pakistan Military Academy as an expression of my love for the nation. Inshallah, in the future, I will work with the same zeal and enthusiasm and will come up to the expectations of my nations. I am Battalion Senior Under Officer Zuhair Hussain from 152nd PMA Long Course. Today, 18th October 2025 marks a memorable day in my life since I've been awarded with the prestigious President's Gold Medal for being the overall second best cadet of my course. I stand here because of the blessings of Allah Almighty, prayers of my parents, guidance of my instructors, and unwavering support of my comrades. Each moment spent at the academy, it has not only transformed me as a person, but has also given me a true sense of purpose in life, that is to serve my nation to the best of my capability. I am Gentleman Cadet Syed Hashir Hassan from 152nd PMA Long Course, and I hail from Hangu. Today is a very unforgettable day for me, as I have been awarded Chief of Army Staff Marksmanship Award for being the overall best fighter of my course. This award has been awarded to me due to the prayers of my family, dedication of my faculty and instructors at Pakistan Military Academy. Inshallah, in the future, I will work with the same zeal and enthusiasm to come up to the expectations of my nation. May Allah Almighty help me to lead from the front with courage and devotion to defend Pakistan till my last breath. I am Course Under Officer Shahir Ali from Technical Graduate Course 37, and I hail from Chiniyot. Today is a moment of immense pride and gratitude for me, as I stand commissioned in Pakistan Army and been awarded with the Chief of Army Staff's cane for being the overall best cadet of my course. This achievement has been possible due to the blessings of Almighty Allah, the prayers of my parents, the guidance of my instructors, relentless efforts, and the support of my fellow comrades. This year at Pakistan Military Academy has been a journey of courage, discipline, and transformation, shaping me into a soldier ready to serve with honor and dignity in the evolving and ever-challenging environment. As I hold this cane today, I renew my vow to serve this nation with pride, commitment, and unwavering faith. I, friendly country cadet, Company Junior Under Officer Tekraz Rawat from Nepal, have undergone training with 152nd PMA Long Course at Pakistan Military Academy. I have been awarded with Chairman Joint Chief of Staff Overseas Gold Medal for being the best cadet among friendly country cadets. It is a great honor for me to receive this award and represent my country in Pakistan. I would like to express my gratitude to my brothers in arms from Pakistan and making the stay of my friendly fellow country cadets so memorable. Pakistan and Nepal are brotherly countries with rich history and glorious future. It is very hard to put this feeling into words, as I leave this academy with heavy heart. Pakistan is and will always be in my heart, and I shall present myself as an ambassador of Pakistan in my country. दिल को छू लिया आप लोगों ने, बहुत याद आओगे पाकिस्तान और 152 Long Course. I'm Course Under Officer Syed Muhammad Hadi from Integrated Course 71. I belong to Rawalpindi. Today, I have been awarded with the Commandant's cane for overall being the best cadet of my course. Besides my hard work and dedication, this honor has been conferred upon me due to Allah Almighty's blessing, prayers of my parents, and pristine standard of training imparted by our faculty at Pakistan Military Academy. Training at Pakistan Military Academy has been a cherishable experience where each one of us was enabled to explore our hidden abilities and potential to deliver under tiring circumstances. Today, I pledged that I will keep working hard with the same zeal and fervor to live up to the trust of my nation and expectations of Pakistan Army. I am Course Under Officer Hadia from Lady Cadet Course 26. It is a matter of great pride for me to have been awarded with the Commandant's cane for being the overall best lady cadet of my course, and I bow my head in humility to the Almighty Allah. I am immensely grateful to my parents and the faculty here in Pakistan Military Academy for their constant support and guidance. Inshallah, I shall continue to work hard with the same zeal and enthusiasm. I endeavor to be a role model for the young women who are aspiring to serve this nation, this great nation, with dignity and honor. I am Friendly Country Lady Cadet Course Sport Sergeant Jannatul Mawa from Bangladesh. I underwent training in Pakistan Military Academy with Lady Cadet Course 26 and have graduated today from this esteemed academy. I am honored to have been awarded with Commandant's Overseas Gold Medal for being the best
friendly country, Lady Cadet. This academy has not only forged me into a capable officer but also cultivated a profound sense of belonging with my Pakistani colleague. The shared experience of demanding training has laid a profound foundation of friendship between us. मेरा नाम अकेडमी स्पोर्ट्स सार्जेंट शाफयाज है और मैं खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन ज़िला कुरुम से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज 152 लॉन्ग कोर्स के साथ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हो रहा हूँ। ये सफ़र अज़म, गैरत और ईमान का सफ़र था और मेरे सूबे के बहादुर रिवायात ने मुझे सिखाया है कि वतन की खातिर जान भी कुर्बान है। मैं वादा करता हूँ कि हर हाल में पाकिस्तान की हिफाजत करूँगा। मेरा नाम सार्जेंट आसिम मंजूर है। मेरा ताल्लुक 152 PMA लॉन्ग कोर्स से और मैं सिंध के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। आज मैं फ़ख्र से ये वर्दी पहने खड़ा हूं। ये सिर्फ लिबास नहीं, ये ज़िम्मेदारी, इज़्ज़त और शुहदा की अमानत। ये सफ़र मेहनत, कुर्बानी और जज्बे ईमान से भरा हुआ है। मैं अज़म करता हूं कि वतन की खातिर हर लम्हा तैयार रहूँगा। ईमान, तकवा, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह मेरा रास्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। मेरा नाम कंपनी सार्जेंट मेजर मोहम्मद इब्राहिम है और मेरा ताल्लुक 152 PMA लॉन्ग कोर्स से है। मैं ज़िला देरा बुगटी बलूचिस्तान का रिहाइश पजीर हूँ। मेरा पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करने का मकसद कौम का दिफा और मुल्क की खिदमत है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे इलाके के लोग किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं, तो उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आएँ और इस अजीम इदारे पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करके मुल्क को कौम की खिदमत और मुल्क का दिफा करें। मेरा नाम GC अहमद है। मेरा ताल्लुक 152 PMA लॉन्ग कोर्स से है। मुझे फ़ख्र है कि मैं शहीदों के ख़ानदान से हूँ। मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई दोनों इस वतन की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। मेरे वालिद सब इंस्पेक्टर खालिद नसीर ने 17 जून 2001 को आज़ाद कश्मीर में जान का नजराना पेश किया। मेरे भाई लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन ने 3 सितंबर 2020 में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश किया और आज मैं अपने वालिदैन और उस्ताज़ा की दुआओं से और अपनी मेहनत से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करके पास आउट हो रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी ख़ानदान की रवायात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन रहा हूँ और इसकी हिफाजत की खातिर कभी भी जान का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करूँगा। मेरा नाम कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर अहमद नुमान है। मेरा ताल्लुक 152 PMA लॉन्ग कोर्स से है। मेरे वालिद साहब मेजर जनरल हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बचपन से ही अपने वालिद साहब को इस वर्दी में इस मुल्क की खिदमत करते हुए देखकर और उनकी जद्दोजहद, लगन और कुर्बानियों को देखकर मेरे दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी इस मुल्क की खिदमत कर सकूं और इंशाअल्लाह अगर मुझे भी कभी मौका मिला अपनी जान का नजराना पेश करने का तो मैं इससे दरेग नहीं करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।